Hi, welcome to a new episode of Sportsy Let's Aim Sports. And believe me, today's episode is all about aiming. Today we have with us someone really special. We have with us Rohit Vartak, a 34-year-old daredevil who is a highland adventurer from Lonavala near Pune, Maharashtra. He has taken the adventure standard of India to the really higher level, literally. Rohit had just returned from the Rakchham Affair, the journey of these Sahyadri-based climber who dare to venture into the Indian Himalayas and claim the first Indian ascent by repeating the iconic route of Shoshala Peak. After climbing konkankada of Harishandragarh, Rohit and his team had set the eyes on the big wall, but this time in the Himalayas. A 750-meter tall route called Trishul Direct on Shoshala Peak, based in the Bapsa Valley of Himachal Pradesh, seen from the Raksham village, was first climbed by the late Mammoth Pratyam athlete Giovanni Curisi with his friend Ellie and Yannick in 2011. After their first ascent, no one attempted it up till now. The Rakchham Affair, the Shoshala Peak climbing, is done by our local Lonavala boys. Rohit started participating in rock climbing competition and did it until 2017. Throughout this period, he won several national level competitions. His first competition was the Girivihar competition in Mumbai. He made a sport climbing wall in Lonavala itself with the purpose of rock climbing. Professionally, Rohit is a training manager with a private company. However, his love for mountaineering and rescuing started in 2002 when he used to rescue snakes in Lonavala. He started conducting a lot of adventure camps in the schools and colleges. And that was the time when actually somebody called him to do rock climbing and he could not do it. And he said, I think this is something I want to do. Rohit is a part of NGO called Shivdurga in Lonavala. They used to conduct treks, but with time, they have started rescue operations as well and doing a phenomenal job. Every year, along with the rock climbing, they rescue about 40 people. With this NGO also incorporate an animal rescue center in Lonavala. Rohit called the Dean Potter as his inspiration, and that's where he came across his slacklining videos. This gave him the idea of trying highlining, since no one on India was doing it. We are going to chat with this amazing guy with so many stories. So please welcome the adventurer for whom the sky is the limit, literally, and who is hiking the heights with the highlines, our own mountain man, Rohit Vartak. सोशाला 2011 मध्ये स्विस टीमने केलेला आहे. त्यानंतर भारतात अजून कोणी त्याच्यावर म्हणजे प्रयत्न सुद्धा केलेला नाहीये. विजनच नव्हते की हिमालय जायचं आणि रॉक क्लाइंबिंग करायचं. शोशला पीक एक छुरी की तरह खड़ा पत्थर है, बिल्कुल खड़ा पहाड़ी है. 2500 फुटाची एक वर्टिकल बिग वॉल आहे जो की पॉसिबल नहीं है. तेव्हा असा विचार नव्हता की लगेच जाऊन करू. ऑल द बेस्ट. आणि देन मग कोकणकडे कंप्लीट झाल्यावर असं वाटलं की आता सोशाला गेला पाहिजे. वेदर खराब झालंय. आय थिंक आता वाइंड अप करावं लागेल. लगेच पुढच्या 5 मिनिटात पाऊस पण पडू शकतो किंवा स्नोफॉल होऊ शकतो किंवा हेवी विंड होऊ शकते. तर मग असे आमच्या 23 माउंटेन डेज पैकी 11 दिवस हे पावसाचेच गेले. क्रक्सने माझा बोटाचा क्रश केला. सगळ्यांना वाटलं की आता परत सोडावं लागतं का क्लाइंब, पण ऑलमोस्ट सगळ्यांच्या मनाची तयार झाली होती की आता जॉब गेला तरी चालेल, सगळ्यांचा बिझनेस गेला तरी चालेल, पण सोशलला क्लाइंब करून जायचा. For this, to tell our stories of battles and glories, the ones that nobody forgets. Yeah, we'll be remembered for this. We came to fight. We came to take what was meant to be ours. There's no place to hide. Oh, it's written all over the stars. Nothing will stop us against all the odds, but just like we promised, we came to fight. Yeah, we came to
Hey, hi Rohit. It's amazing to have you on Sportsy Let's Aim Sports. And you can't even imagine how much I've waited for this a day to have our own mountain man who is probably only 30 kilometers away from where I am. But it's at least right now I get to have you on Zoom. So Rohit, really nice to have you here. Thank you. Yes. So for our viewers and listeners, we have Rohit Vartak with us, uh, a, a, a person who actually by profession he works as a training manager in a private company, but the passion over mountaineering and climbing, rescuing is a different level. And what we have here is what you want to talk to him about is about the complete adventurer for whom the sky is the limit, and with highlines. And what all the other words that we are going to hear from him throughout this. But the most important thing, one of the things that we want to talk about is the whole the Rakchham Affair. So Rohit, it's great to have you. And माझा पहिला प्रश्न, the first question to you is, what got you into this? You had a proper corporate job or studying and everything. I know you're born and brought up in Lonavala, so you are born in mountains. But what attracted to the adventure sport? Actually, I was not into adventure sport. Then first I started studying on wild animals basically. So I'm a snake catcher. Like I've been catching snakes since like 2002, and then I started doing events of like snake shows into adventure camps and schools. So एक ऐसे कैंप में गया था और देन वहाँ पे कुछ एडवेंचर लोग आए थे एंड आई वाज देयर फॉर स्नेक शो that time they told me why don't you try rock climbing and मैंने तभी rock climbing try किया तो मुझे जरा भी like climbing आया नहीं and then like I am अरे यार ये तो ज्यादा चैलेंजिंग है like मैं स्नेक कैच करता हूँ उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है बेसिकली तभी से मैंने like rock climbing seriously लिया then I started studying about rock climbing and practicing on rocks फिर धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ तभी से मैं रॉक क्लाइंबिंग में आया बेसिकली and fortunately I joined one NGO which was already working in Lonavala, Shivdurga. उनके साथ जाके फिर रॉक क्लाइंबिंग और बढ़ने लगा. Yes, and हम लोग इतना सोचा है, like read किया है about the Shivdurga and everything about how are they doing all the activities in Lonavala. I think उसके बारे में तो बात करना बनता ही बनता है. लेकिन उसके पहले जब आपने सोचा कि पहले घर वाले ऑलरेडी बोल रहे होंगे ये आदमी पागल ही है जो पहले स्नेक कैच कर रहा है, उसके बाद माउंटेनियरिंग कर रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जा रहा है. So see, this is not a common thing for anybody that brought up to me we are Maharashtrian families जिकडे जास्त कोण उड्या मारत नाही. So how was the support and what did you do to convince the family that okay, I want to do something like this and I want to really make probably my career out of it? Yeah, like पहले तो स्टार्टिंग में like I belong from joint family और joint family कैसा है ना कि like कोई मेरे घर में कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई इंजीनियर बन रहा था, कोई आर्किटेक्चर कर रहा था. On I am like every day I am going on the mountains and catching snakes. ये काफी weird था घर वालों के लिए और रोज मुझे डांट पड़ती थी इसके लिए. एंड एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, खराब हो गई, ऐसे लग रहा था. बट देन लाइक स्लोली जैसे कॉम्पिटिशन्स खेलने लगा, पार्टिसिपेशन करने लगा, प्राइजेस आने लगे, देन रेस्क्यू की वजह से न्यूज आने लगे, काफी सारे एक्सपीडिशन में अवार्ड्स मिलने लगे. देन उनको थोड़ा बिलीव हुआ कि कुछ वेस्ट नहीं है, अभी कुछ कर रहा है. या Okay. No, but it was like very hard to get support from them in the initial stage. अभी तो काफी support करते हैं.
अभी अभी तो मतलब you we get to hear so much about you everywhere. I think it's a dedication, and I'm sure the lot of praise at home, the praying that happened घरी सगळ्या लोकांचे नमस्कार केले त्याचा फायदा मिळतो, because I was just showing one of your clip to my in my family about you walking on the rope and you falling down. My dad was saying याला घरच्यांनी परमिशन कशी दिली? बट बोल सकते हैं कि इनका गलती नहीं है सबका, क्योंकि उन्होंने ये कभी देखा ही नहीं है। Exactly. और हमें यही चेंज करवाना है कि आगे कोई कर रहा है तो उनको ये ना लगे कि ये क्यों कर रहा है। So how do you think you can actually bring more awareness and make adventure sports or mountaineering, highlining, and all those different words that you use in your thing? How do you think that you're going to make more accessible for people? Because me Mumbai I have heard about the Girivan as the only place I had heard while growing up, but there are more places that people can go. Trekking, mountaineering is not something very considered to be safe in India specifically. In Western world, it is considered to be a risk is there, but at least the plan is safe. Here we have other issues as well. So how do you think you can bring more awareness and convert this into that people can follow it through? Yeah, for now, like social media is the main stream, you can say, easily where you can guide people. बट अभी हमने क्या किया है कि लोनावाला में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे क्लाइंबिंग वॉल है, वहाँ पे हम लोग हाईलाइन सिखाते हैं, जितना भी एडवेंचर के लगता है टेक्निकल स्टफ वो सभी सिखाते हैं हम लोग वहाँ पे। एंड फॉर लोकल पीपल इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अभी वहाँ पे लाइक 70-80 स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास और वो अभी सब कुछ करते हैं। तो हुआ क्या है, ये अभी हमने 4 साल हो गए स्टार्ट किया है, बट इन 4 सालों में क्या हुआ कि अभी ये जो मेरे पास सीखने आते थे स्टूडेंट वो इंडिपेंडेंटली सीख रहे हैं। मतलब अभी जाके वो खुद क्लाइंब करते हैं, अगर मैं ना रहूं तो मैं हमारे ग्रुप का पूरा वो रेस्क्यू करते हैं टेक्निकली। तो ये अवेयरनेस अभी आ रहा है और ये लड़के बाहर जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं, हाईलाइन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो शुरुआत तो की अभी अवेयरनेस के लिए, ऑफकोर्स ये बट शुरुआत हुई है। And I think ऐकायला थोडं छान वाटतं, सुनने को इतना अच्छा लगता है कि this is that there are so many kids who are taking it and they are taking it to next level. I think that is something is what you started. People are taking it forward, and you are only 34, so you have a long way to go from here as well. But this is something is a revolution that we call about. So you use few words about highlining or slacklining, climbathon. I just want to understand from you how is mountaineering and bouldering is different than highlining or slacklining, and what is climbathon? So wherever I have followed you on social media, I have heard this name. So I said, let me just get those things cleared from you. Yeah, so slackline is a very new sports in India. So जैसे डोंबारी चलते हैं लाइन पे, सेम वे slackliners चलते हैं, रोप के ऊपर बैलेंस करके चलना। और उसमें ये इंटरनेशनली काफी बड़ा स्पोर्ट है, इंडिया में काफी नया है। It just started in 2014, 13, 14. बाहर इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्लैकलाइन के, हाईलाइन के। तो अभी स्टार्ट हुआ है एंड यही स्लैकलाइन हम लोग जब माउंटेन पे करते हैं, सो दैट कॉल हाईलाइनिंग। तो वहाँ पे ज्यादा रिस्क होती है, आई वुड से रिस्क बहुत कम होते हैं कंपेयर टू स्लैकलाइन, बट वो दिखता काफी डेंजर है। बट टेक्निकली सोचे तो सबसे सेफेस्ट स्पोर्ट्स है एडवेंचर स्पोर्ट्स में, हाईलाइन इज द मोस्ट सेफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। इतना सेफ है बेसिकली। After you make up your mind to start walking on that, right? Okay, then become safe. Yeah, of course. Okay, but like हाँ, ये दिखता सिर्फ डेंजर है, बट अगर आप कंपेयर करें ना, लाइक कोई भी रोड पे चल रहा है, दैट इज आल्सो डेंजरस। इवन वॉकिंग इन द बाथरूम, दैट इज आल्सो डेंजरस, बट हाईलाइन मोर सेफर देन दैट। Okay, so how did you actually thought of doing the highline, and how do you bring yourself up after falling down? I have seen so many videos where you actually fall down, you come back on the rope, start walking again. How do you actually do that? Is it, again, how much of physical strength is required and how much of mental strength is required in this? Yeah, it's totally, I would say it is a mental game. Of course, if you are doing highline, then you need some kind of physical strength to again got up and walk. But it's a totally mental game, because
वो हाइट पे जाके आपका माइंड प्रिपेयर करना है कि आपको खड़ा होना है, यू कैन फॉल, स्टिल यू हैव टू स्टैंड अप एंड वॉक। तो Yeah. ये काफी मेंटल गेम है, और जितना लेंथ बढ़ेगा, जितना डेप्थ बढ़ेगा, उतना डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है। Okay. बट जब भी मैंने शुरुआत की थी 2014 में, तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं था बेसिकली किस चीज का, इंडिया में कोई नहीं कर रहा था ये चीज। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब की, मतलब ये क्लाइंबर था, उसके वीडियो देखते हुए मैंने देखा था कि ये हाईलाइन क्या होता है। तो स्टार्टिंग में ट्राई किया, फेल हुआ। देन उस टाइम पे इतने वीडियोस भी नहीं थे। तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर से वीडियो मिले, एंड देन आई स्टार्टेड वॉकिंग फ्लैट। एंड देन लाइक फिर पता चला कि ये काफी सेफ स्पोर्ट है, थैंक्स टू क्लाइंबिंग। मतलब मैं पहले से क्लाइंबिंग में था, तो टेक्निकली इतना चैलेंजेस नहीं आया कि उसका सेटअप करने में। बट ऑफ कोर्स अगर टेक्निकल चीजें आप सही से करते हो, तो हाईलाइन इज द मोस्ट सेफेस्ट स्पोर्ट। बट वो समझना चाहिए कि ये एक्चुअली इतना सेफ है, क्योंकि इसमें जो गियर यूज होता है, जो भी इक्विपमेंट यूज होता है, वो काफी सेफ होता है। And believe me, I'm this never happens. The first time I'm actually sitting on edge of my chair while listening to you. It is like सगळं चाललंय ते edge वर चाललेलं असं वाटतं मला. So what is the highest height that you have actually walked on? So the highest height, I would say it's like more than 500 feet. Okay. Yeah. And I would say I crossed a 700-meter line, which was not completely walked, but I crossed it in multiple falls. Okay. That was India's longest line, 700-meter long. And where do it? It was in Duke's Nose, Lonavala. Okay, in Lonavala only. Yeah. Deuce knows. Okay. So like we like in last like 5-6 years, Lonavala is like a hub for adventure. वहाँ पे हाईलाइन है, वहाँ पे क्लाइंबिंग है, और सब कुछ होता है वहाँ पे. So And and I it is think like हाँ, it's घर के a पीछे. घर के पीछे Yeah. है. That's what I was talking about. Like घरी बसल्या बसल्या you can end up doing everything घरी बसल्या बसल्या. So again, so skyline, highline, and slacklining and everything is fine. What is climbathon? So so climbathon क्या था पता है? Basically मैं लोनावाला से शिफ्ट हो रहा था केरला for my new job, and वहाँ पे पता है केरला में माउंटेन नहीं है, and तो सोचा कि अभी क्लाइंब करने नहीं मिलेगा जो महाराष्ट्र में करने मिलता है, because we have सह्याद्री here. सह्याद्री रेंज. Yeah. So फिर सोचा कि अभी जा रहा हो तो कुछ क्लाइंब करके जाओ, टाइम बहुत कम था. तो सोचा कि कम टाइम में बहुत ज्यादा क्लाइंब करते हैं. तो पूरी टीम थी हमारी, लोनावाला की शिवदुर्ग टीम, और गणेश साहब, योगेश है, बाकी सब थे. तो हमने प्लान किया कि क्लाइंब करेंगे मिनिमम टाइम में, चलो 2 दिन में जितने पिनाकल क्लाइंब हो सकते हैं उतने करते हैं. सो वो था एक्चुअली क्लाइंबाथन. तो हमने 2 दिन में 7 पिनाकल किए. Wow. या सो ट्रैवल एंड क्लाइंब, उसमें सोना खाना, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए. फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था, और 2 दिन में 7 पिनाकल. तो उसके लिए इसे क्लाइंबाथन नाम है, जैसे मैराथन आता है, सेम लाइक क्लाइंबाथन. Yeah, I can imagine 7 in 2 days. I think जरा जास्त झालं, but I think it is what you live for. So I have one more question about, you spoke about the mind thing, right? So what do you do? What are the method that you have to get into the zone? Because you can't be distracted when you are there. So what do you do? Do you have any specific practice that you follow? Meditation, yoga, visualization, any kind of practice that you follow to get into the proper zone? Yeah, for highlining, you're saying? Yeah. Okay. Yeah. I mean, everything that you do, it's about the sea line, right? Whatever you do. So Yeah. for So anything both, that I do rock climbing and I do highlining. Both are like completely opposite. okay. So highline is totally on your physics. So physical challenges बहुत है. अगर आप 2 या 3 हफ्ते क्लाइंब नहीं करोगे, then you won't perform same like जैसे आप करते रहते हैं. तो आपको हमेशा फिजिकली फिट होना होता है. एंड हाईलाइन इज टोटली मेंटल गेम. सो अगर आप मेंटली फिट हो, मेंटली आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, फोकस्ड हो, तो आप कभी भी लाइन चल सकते हो. दैट सिंपल. बट हाईलाइन बेसिकली, मैं क्लाइंबिंग और हाईलाइन दोनों में योगा बहुत काम आता है.
मेडिटेशन में करता हूँ, वो भी बहुत काम आता है दोनों स्पोर्ट्स में। हाईलाइन में मैं लाइक आई वुड लाइक टू लिसन सॉन्ग्स ऑन हाईलाइन, वो काफी अलग फील होता है, या स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल होता है तो काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि हाईलाइन पे चलता है देन ये Okay. लाइक कंसंट्रेशन के लिए हेल्प करता है। Wow. And at that height, you're listening to songs and getting into a zone. I think that itself is shows a very amazing mental strength. I think Rohit, amazing hai the. So one more on the mental side. One question that we have heard that konkankada is one of the toughest in the Sahyadri ranges, and Donda fails halas before you actually could do it the third time. What was going through your mind the first time? Were you not ready, or you underestimated the thing? Then second time, what happened, and actually, how was the feel when you actually conquered konkankada? Actually, Konkankada, I would say, Konkankada is not the biggest mountain in Sahyadri, but वहाँ पे जो डेप्थ है वो आपको खुद को क्वेश्चन करती है कि मैं एक्चुअली कर सकता हूँ क्लाइंब या नहीं करता हूँ, इतना फिरोशियस है कोकनकड़ा। तो जितनी बार भी जाते हो ना, ऐसा नहीं कि हमने क्लाइंब किया और 2 बार क्लाइंब किया मैंने तो अभी जाता हूँ उतना ही डर लगता है। सच में। तो जब भी हमने 2 बार अटेम्प्ट किया तभी तो चैलेंजेस काफी थे, अनईवीज थे, रॉक फॉल वहाँ पे कंटिन्यूसली चैलेंज है कि वहाँ पे कंटिन्यूसली रॉक फॉल होते हैं। एंड द मेन थिंग इज कोकनगढ़ टोटली ओवर हैंग है, लाइक 600 फीट उल्टा है काफी। तो अगर हमें कुछ हो जाए क्लाइंब करते हुए तो रेस्क्यू कौन करेगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है जो अदर माउंटेन्स में नहीं है। क्योंकि अदर माउंटेन्स में आप ऊपर से नीचे आओगे तो आप कहीं ना कहीं किसी को भी रेस्क्यू कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है। अगर इसमें अगर आप डिसेंड करते हो तो आप रॉक से काफी दूर होते हो क्योंकि आपको रूफ क्लाइंब करना। तो ये सभी फैक्टर्स थे जो हमें काफी वीक कर रहे थे हर साल। दो साल हमने ट्राई किया, फेल हो गए। बट देन लास्ट थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि मेरा पार्टनर था और एक योगेश, सो योगेश और मैंने, हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं एंड फिजिकली हमें पता था कि हम लोग फिजिकली तो काफी स्ट्रांग है बट थोड़ा पुश करना है, इतना ही था जो हर साल नहीं कर रहे थे। तो वो पुश करना काफी इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। और जो 2 फेल अटेम्प्ट थे वो भी इतने इम्पोर्टेंट है कि हमने बहुत कुछ सीखा वो फेल अटेम्प्ट में। और पहले ऐसे लगा कि वो 2 फेल अटेम्प्ट मतलब 2 ईयर काफी वेस्ट गए हमारे, अगर हम लोग पहले ईयर पुश कर लेते थे तो फिर हो जाता था क्लाइंब, ऐसे लगा क्लाइंब करने के बाद। बट देन अभी जैसे नेक्स्ट एक्सपीडिशन कर रहे हैं कोकनकड़ा के बाद और भी एक्सपीडिशन हुआ, तभी हमें समझ में आया कि वो 2 फेल अटेम्प्ट काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें जो चीजें सीखी है वो अभी काम आ रही है सब कुछ। पडून उठण्यामध्ये जास्त मजा असते. So it's so good, so good. Rohit, I think I actually feel that I can talk to you for the whole day, but with considering the time and everything, मला एक प्रश्न आहे before I actually can get into the whole the Shoshala Peak is about the NGO that you work with. You guys do a lot of rescuing of animals as well as people who are going for that. So how did that actually start, and how do you get funds? Because this is a costly thing. It is एक swasta nahi hai. It is not cheap affair doing all these things. So how do you actually work on that NGO, and how can people contribute to the NGO by financially or anything else? या सो बेसिकली अभी फंडिंग इतना होता नहीं है शिवदुर्ग को, जो भी हम लोग कर लेते हैं बट सम टाइम कोई कोई दे देता है एज अ डोनेशन, शिवदुर्ग को दे देता है। बट आई वुड से मैं क्लाइंबिंग पार्ट देखता हूँ तो शिवदुर्ग में, सो क्लाइंबिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग इवेंट्स लेते हैं, एडवेंचर इवेंट्स। और एडवेंचर इवेंट्स में जो हमारे पास बच्चे आते हैं सीखने के लिए, वो भी उसमें काम करते हैं एडवेंचर इवेंट्स में एज अ फ्रीलांसर। और जितना भी जो भी मनी आता है, जो भी फंड आता है, वो हम लोग क्लाइंबिंग के डेवलपमेंट में यूज करते हैं। तो सेम वे बाकी भी जैसे शिवदुर्ग के और भी विंग्स है, जैसे एनिमल रेस्क्यू है, कल्चर डिपार्टमेंट है, साइकिलिंग है, या और भी है, उसमें भी ऐसा ही चलता है। हर एक में एक एक्सपर्ट है, वो उसका विंग हैंडल करता है और वो सेम वे ऐसे ही करता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा फंडिंग आता है।
रेस्क्यू, आई वुड से रेस्क्यू तो पूरा हम खर्चा करते हैं, और एनिमल रेस्क्यू में सब ज्यादा फंडिंग होता है कंपेयर टू ह्यूमन रेस्क्यू। तो एनिमल रेस्क्यू में फंडिंग आता है, बट नॉट इन ह्यूमन रेस्क्यू। Okay. लेकिन how did you actually think about the whole rescue part of it? Animal rescue, I think we know that there are entities which doing animal rescue, but human rescue is something that is because there are very few people going for it, and it's a different kind of challenge that you have. So, what got you into that, and what is the satisfaction at the end of it? Finally, saving an animal or human? Finally, you're saving a life. So, Yeah. what is the satisfaction that you get at the end of the day? या सो दो चीजें हैं मैं बोलूंगा कि बिहाइंड एवरी रेस्क्यू व्हाट आई एक्सपेक्ट। एक तो है कि किसी की जान बचाना, ऑब्वियसली एक है। आई वुड से रेस्क्यू में ऐसा होता है कि 90% टाइम रेस्क्यू नहीं होता, रिकवरी होती है। बिकॉज इतने डेप्थ वैली है कि कोई भी अगर गिरता है या कुछ होता है तो डेथ ही होती है। बट रेस्क्यू भी आता है, तो एक तो है कि किसी की जान बचती है। सेकंड इज लाइक मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है, हर रेस्क्यू में मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो अभी जैसे कोकनगढ़ा करना है या और भी कोई बड़े माउंटेन करना है, तो लोगों को इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि रोप मैनेजमेंट और इतने लंबे इतने बड़े पहाड़ पे जाओ और प्रैक्टिस करो। हमें ये रेस्क्यू सिखा देता है सब कुछ, तो वो एक चीज है। तो दोनों चीजें हो जाती है इसमें। That's the thing. Excellent, excellent. And I think more and more power to you about doing that work because it's a noble work. And I think at least human can make a mobile phone call to come and somebody save them, but animal saving is something that is more crucial in the whole process. They can't even make a phone call to call them to somebody to save them. But yes, Rohit, coming to the last part, yeah, I know it's one of the biggest part, but coming to the last part, that the first ever Indian team to do the Shoshala Peak, and it is something that is called what I think it is called as the Rakchham Affair. So Rakchham Affair. Rakchham Affair. So hey, कसं झालं? How did actually all these things start, and what was that journey? If you can just give us some brief about it. Yeah, so I was in the competition, rock climbing in 2011. So वहाँ पे मैं क्लाइंबर को मिला, स्विस क्लाइंबर एली, एंड सो उस टाइम पे उसकी फिल्म जो उसने क्लाइंब किया था सोशाला, उसकी फिल्म दिखाई थी वहाँ पे। एंड देन आई मेट हिम, आई आस्क्ड हिम कि जो भी डिटेल है इस क्लाइंब के वो पूछे। अगेन ही केम इनटू इंडिया इन 2014। उस टाइम पे मैंने उसे क्वेश्चन पूछे थे काफी कि ये क्लाइंब मुझे करना है तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट उसका इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं था। देन सोशल जाने से पहले बिग वॉल का प्रैक्टिस करना था। देन वी चूज कोकनकड़ा। सो कोकनकड़ा में 3 अटेम्प्ट गए, 4 अटेम्प्ट गए, एंड देन वो काफी बड़ा लर्निंग था। उसके बाद भी हाईलाइन प्रोजेक्ट्स हुए काफी सारे। सो ये सभी जो था ये सोशल का प्रैक्टिस था बेसिकली। Okay. बिग वॉल ट्रेनिंग था, और इंडिया में इतना बिग वॉल कोई करता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो ये फील्ड चूज करते हैं, बिकॉज क्लाइंबिंग, बिग वॉल क्लाइंबिंग इज क्वाइट चैलेंजिंग कंपेयर टू अदर क्लाइंबिंग। वहाँ पे सर्वाइवल है, बहुत कुछ होता है वहाँ पे। Yeah. सो सोशला फिर हमारे लिए काफी नई चीज थी, बिकॉज वी लिव इन सह्याद्री, नॉट इन टू हिमालयाज। सो हिमालयाज के चैलेंजेस काफी अलग है कंपेयर टू सह्याद्री। बट पता था हमें कि हमें बिग बॉल में टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज टीम काफी स्ट्रांग थी, सह्याद्री में बिग बॉल करती है। बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओनली द चैलेंज वाज जो हिमालयन क्लाइमेट चैलेंजेस है, लाइक रेन, स्नो, जो भी होगा वो हमें चैलेंज आएगा, बिकॉज हमने किसी ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड शिवदुर्ग इज लाइक, शिवदुर्ग ने सह्याद्री में बहुत कुछ एक्सपीडिशन किए, बड़े रेस्क्यूज किए, एनिमल रेस्क्यू सब कुछ करता है, बट यहाँ से कोई हमारे टीम में से हिमालय नहीं गया। तो हमारे लिए ये काफी बड़ी बात थी जाके क्लाइंब करना। देन 3-4 मंथ्स हमने उसके ऊपर स्टडी किया, उसके लिए ट्रेनिंग किया। तो टीम पूरी एक साथ ट्रेनिंग करते थे फिजिकली, जो भी लाइक क्रॉसफिट ट्रेनिंग, बिकॉज वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे जाके ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, इसके लिए हमने क्रॉसफिट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा की थी। और फिर बीच में आ गया कोविड,
कोविड Yes. चैलेंज था या एंड कोविड की वजह से हमारा एक्सपीडिशन डिले हो रहा Okay. And if I'm not wrong, ज्या वेळेला तुम्ही तिकडे गेलात, just before that landslide झाला होता in the similar area, right? था सो जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ उसी विलेज से लाइक 6 किलोमीटर पहले जो गाँव आता है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और वहाँ पे लाइक 9 फैटेलिटीज हुई थी तो फिर Bridge टूट गया था, I think if I'm not wrong, bridge टूट the गया था, community bridge टूट गया था and everything, right? So it's pretty disastrous, yeah. तो उसकी वजह से और डिले हो गया देन गांव में पहुंचे तो जो हमें परमिशन मिली थी वो भी डिनाई कर दी गांव वालों ने क्योंकि ये लैंडस्लाइड हुआ तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा तो ये सिर्फ क्लाइम नहीं क्लाइम से पहले भी बहुत चैलेंज फेस किया हमने ड्यू टू कोविड और लोकल्स बहुत कोई भी सपोर्टिव नहीं था वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग आए थे पहले ऐसे क्लाइम करने के लिए वो तो इधर लाइक वेस्टर्न क्लाइंबर्स थे इंडियन कोई नहीं था तो जब भी इंडियन गए तभी उनके ऊपर क्वेश्चन हमें पूछा गया कि आप कर सकते हो क्या आपने पहले किया है क्या या आपके पास क्या परमिशन है बट यही क्वेश्चन था हमारा कि जो फॉरेनर्स आए उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया हमसे क्यों मांग रहे हो परमिशन तो उनको काफी मतलब डाउट था हमारे ऊपर क्योंकि इंडियन ने इतना बड़ा क्लाइम किया ही नहीं था लोगों को एवरेस्ट पता है लोगों को और चीजें पता है बट एवरेस्ट इज नॉट द डिफिकल्ट वन हाँ सबसे बड़ा है बट सबसे डिफिकल्ट नहीं है ये जो बिग वॉल है इंडिया में कोई करता ही नहीं है ऐसे तो उनको डाउट था हमारे ऊपर कि करेंगे या नहीं करेंगे बट देन हम लोग गए क्लाइम किया उसके बाद नीचे आने के बाद फिर गांव वाले हमारे हमसे बात करने लगे अदरवाइज काफी रूडली बात कर रहे थे बट द होल एक्सपीरियंस वाज क्वाइट डिफरेंट कि ये फर्क दिखाता है कि वेस्टर्न क्लाइंबर और इंडियन क्लाइंबर में कितना फर्क है और सोशल ना कहीं ये गैप फिल कर देगा इन फ्यूचर And I think this is something so important कि you guys became the first ever Indian team to complete that. I think that itself is a big thing. It's a start that has happened and big wall. I think 2,300 feet है ना the wall थी. yes Yeah, and it is something I've seen the film and it is I'll be putting it on the at in this video also I'll put the link to the film but for people to see it but why all you did everything for last what 18 years that you've been doing multiple activities right what has been your most scariest experience till date yeah so scariest I would say rescue part like we did a rescue where people got stuck on the mountain और उनको हनी बीज काट रहे थे या सो वहां से उन दोनों को रेस्क्यू करना वन ऑफ द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में क्योंकि उनको हनी बीज काट रहे और हम लोग भी वहां पे जा रहे हैं उनको निकाल रहे तो हमें भी काटने वाले थे तो ये बहुत स्केरियस्ट एक्सपीरियंस था हमारे या and okay which is the your most favorite place in Lonavala in Lonavala in for you yeah in first Lonavala then I'll go to Sahyadri first I want to ask only about Lonavala it's like Lonavala I would say there is no any other place than Duke's Nose because like almost I spend like 5 to 6 days of every month on Duke's Nose actually. Oh wow that we get to see while driving you're already sitting there अरे घर पे कुछ नहीं then I go there I stay and I come back to the office yeah oh wow and in Sahyadri in Sahyadri of course konkankada okay and what is that what's your dream on the journey of mountaineering and big walls and everything that you've been doing what is your biggest dream I would say मैंने एक माउंटेन देखा था बहुत पहले एक फिल्म देखी थी मेरू सो ये फील्ड में कहते हैं कि मेरू इज द टफेस्ट क्लाइंब इन द वर्ल्ड गंगोत्री में ही है हिमालय में एंड लाइक मैंने ऐसे प्लान किया था कि जब भी शोशाला करेंगे एंड मैं समिट पे बैठ के लोगों को पूरी टीम को बोलूंगा कि चलो लेट्स डू मेरू नाउ बट मैंने शोशाला किया एंड देन आई रियलाइज कि मेरू कितना डिफिकल्ट था सीरियसली एंड लाइक आई हैव टू गिव लाइक more 2-3 years to prepare for Meru. So Meru is one of the like dream that I want to achieve. And we wish you all the best to achieve all the dreams, all the success by staying safe
and spreading the awareness. Rohit, you can't imagine how excited I am right now about after, even though like we've been talking for last 30 minutes, and this is really exciting because this is a journey. It's a journey by heart. It is something that you follow, that your heart is a different place. You and the way you have done it's phenomenal, Rohit. More power to you. And Thank you. last point, I always say that what is your message to all the viewers and listeners of our channel who don't know probably about adventure sports or anything, or just about the life, because as I have seen some of the thing that the life teaches a lot when you are upside down on the highline. So what is your message to all of you viewers and listeners? See, I've been into highline sport like for years now, and see, that sports teach me everything about balance. So life is about balance basically. So when you're pursuing your dreams, you have to balance your family, your friends, and your career and your passion also. So Yeah. that's the simple message what I learned from my Excellent. passion. Excellent, Rohit. I don't think it could have been any better message than balancing your life. I think it is phenomenal. Be safe. More power to you. And आपण परत नक्की गप्पा मारू एखाद्या स्पेसिफिक टॉपिक, एखाद्या स्पेसिफिक कड्याबद्दल आपण स्पेसिफिक बोलू. I would have more and more chats with you. And hope I also contribute a little bit by spreading more awareness about the adventure sport and everything that you do, and anything towards the foundation NGO that you are doing. Wonderful job. Wish you all the best, and thank you for being here. I have thoroughly enjoyed last 30 minutes of my chat with you. Thank you. Thank you. Thank you so Chal, much. take care. Bye bye. Take care. Thank you for watching. Thank you for liking, and thank you for sharing. But please do subscribe to our channel, Sportsy Says, and help us spread the word about Sportsy. We go with the same handle, Sportsy Says, across all the social media platforms and podcasts.